Hi, welcome back. So I just came out of shower and my hair are wet. I thought that they'll dry quickly, but they are just not ready to dry. So we are filming this video with a towel on my head. So get ready. So for moisturizing, I'm using this Face Shop moisturizer जो आधा मैं use कर चुकी हूँ. It's not for your acne or something. It's a really hydrating cream that will going to hydrate your skin. That will make it look very glowy. So if you want something just for glow, so go for it. Especially for my face moisturizers, I prefer creams that make my face look kind of wet, which is another word for moisturize because I have dry skin. So if I keep my skin very much moisturized, so that way I can avoid all the dry patches. I have no idea how people have that straight hairline. If I go for it, I think I look half bald. I'm using this illuminating primer. There are people who think that luminant primers are basically for very heavy makeup, but honestly these types of primers just give you a normal glow, like the natural glowy thing to your skin, and that gets covered eventually with the foundation and makeup and everything. So you can even wear it in daily wear as well, because at the end we all want that natural glow, and you get the natural glow from this thing only. So now that my skin is all moisturized and primed, moving towards the foundation. So I have these two foundation. I'm going for L'Oreal foundation, but it's kind of light, so I have to mix the e.l.f. foundation. I tell you what, I wanted to try e.l.f. foundation from very long time. जब से वो आया तब से. So I wanted to wait because I already have so many foundations. So I was just waiting कि एक आधी कोई bottle finish हो तब मैं foundation लूँ. But then I saw it on Nykaa. It's on sale. So मेरे को लेना ही था और मैंने बस ले लिया. And I totally love it. I'm so scared कि ये foundation मेरे को hook ना कर दे कि मैं वापस Maybelline Faces Canada या वो जो affordable वाली category है उस foundation में ना जा पाऊँ, क्योंकि after K-beauty I think it's so hard to move back onto Maybelline and stuff like that. So yeah, let's just hope. Two things to note: it has that amazing coverage. I think medium to full coverage वाला scene. Full तो नहीं but medium coverage तो है ही है. Secondly, the finish. Oh my god, it's not too dewy and it's not too mattifying. So just imagine getting this flawless skin. This is the solution. Just go for it. Setting off my neck with some face powder. And when you feel like I don't want to put too much foundation on my neck, just go for the face powder. I'm using these two things. I'm going to outline my brows with kajal, like I want some black pigment, and of course I'll be using the eyebrow gel just to fill it in. I have very sparse eyebrows, so I really need to put on the colors and do all the mehnat. I might think of microblading, but not yet. I'm carving my eyebrow out with the concealer. Whenever something goes wrong with your eyebrows, you have your concealer, your best friend, not to in light shade, मतलब अपने शेड के एक आधा ऊपर नीचे चलेगा, पर बहुत ही लाइट शेड नहीं यूज़ करना, वो हाईलाइटिंग के लिए होता है. वी आर करेक्टिंग हेयर, सो जस्ट गो विद द पॉसिबल क्लोजेस्ट कंसीलर दैट यू कैन गेट and just do all the corrections. Here I'm not doing the eye lift wala thing. I'm just using the inverted V wala thing. Inverted V or normal V wala concealer thing. Now we are blending with a beauty sponge. Back in the days when I didn't know how to do makeup, I would buy all the cheap things that I could get. एक लिस्ट बना के कि प्राइमर चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए and what not, and then I would try it and that would look so bad on me because of the formulation. There are so many things in the market you can buy that are in affordable category, but just don't go for the cheapest thing, because that is just not for you. That is basically crap. That is not for anybody. Like even if you are a beginner or even if you are a pro MUA, you cannot buy, you should not buy basically those kind of things. I'm using this loose powder from Fit Me. I'm going to do a little pat with this fluffy brush, and all I'm doing is just throwing some powder all over my face and not
scratching it, not smudging it, not doing anything, just a little bit of tap tap. Some makeup videos on YouTube are so like fake. They do not use the same product in their daily wear, and they do not do the same things that they show you. Like they tell you this is the natural makeup. Do you think somebody would go out in a cut crease makeup? I mean, I used to go to college just with a bold lipstick and a liner and a mascara, like literally this, not foundation, no BB cream, literally nothing. And my teacher used to like taunt me every time, and they would look at me like, oh, she just does makeup and stuff like that. And do you think like people that tell you that we do this no makeup look where they put on eyeshadow and so many things on their face, and they would literally go out like this, and especially if you live in any part of India, do you think that it's actually possible to wear that? For this makeup, I'm using Nykaa का पिंक वाला आई शेडो पैलेट, एंड आई एम शोइंग ऑल द कलर्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई नाम तो होता नहीं है. सो या, एंड आई लव दिस ग्लिटर. आई मीन ऑल द ग्लिटर थिंग्स, इवन इफ द आई शेडो पैलेट्स आर नॉट वेरी ओरिजिनल, दे आर फ्रॉम ऐसा अफोर्डेबल वाली कैटेगरी वाले पैलेट्स, उनके भी ग्लिटरी शिमरी जो आई शेडोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपिंग होते हैं. आई जस्ट लव दैम. और इतनी सारी कार्ड्स वगैरह आती जा रही है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई. बट एनी वे, लेट्स फॉरगेट इट. लेट्स करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन आवर मेकअप. यूज़ कंसीलर, यूज़ अ लिटिल ब्रश. कोई भी ब्रांड का आईलाइनर खरीद लो, अपना आईलाइनर तो खुद ही लगाना होता है. सो इवन इफ़ विद मी दिस हैपन्स कि एक विंग ऊपर चला जाता है, एक विंग कहीं और चला जाता है, दोनों ही अलग डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं. सो उनको बैलेंस आउट कर सकते हैं कंसीलर से. फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस क्लिनिक मस्कारा. आई डोंट नो सारे स्विस ब्यूटी वगैरह के अंदर ये क्लिनिक का मस्कारा कैसे है मेरे पास, बट इट्स अ रियली गुड मस्कारा. एंड बिफोर मस्कारा आई एम यूजिंग पिंक कलर. देखो सब चिल्ला लो आज ही. फॉर माई अंडर आई, ताकि मेरी अंडर आई एकदम अलग ना लगे. फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं ना, सब कुछ एकदम फ्लैट हो जाता है. सो यू हैव टू रीडिफाइन, कार्व आउट एवरीथिंग. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द ब्रॉन्जर. आजकल आई थिंक मैं ब्रॉन्जर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और कॉन्टोर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ. I should work on that, but I love this brush. There are people who have like defined कि कौन सा brush कौन सी चीज़ के लिए जाएगा. But what if you have so many brushes, जैसे cheap brushes वाले set में आते हैं ना, और बहुत सारे brushes unused रह जाते हैं. If you use them in different things, you will realize कि बहुत सारे brush आपके लिए work करेंगे actually. Like some brushes might work for me जो contour वाला होता है, but that might not work for you. So similarly, just play with it. It's fun. I am using a lip pencil and then I'm using this lipstick. I love brown lip pencil. हर किसी शेड के साथ चला जाता है. एंड दिस शेड, इसका कोई नंबर वगैरह तो था नहीं. तो पूरा ब्रश मैंने क्लीन करने के बाद थोड़ा पिगमेंट छोड़ा और उसी को आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर माई लिप्स. ऑल द ऑड्स ऑफ यूनिवर्स आर अगेंस्ट मी टुडे. इतने हॉर्न्स वगैरह इस टाइम पे कभी नहीं बचे जितने आज बच रहे हैं. बट एनी हु, I'll try to cancel everything. If you're someone like me जो pink और red वगैरह नहीं यूज़ करता है, they are more into like neutral, nude shades, ये थोड़ा सा अलग लग सकता है आपके ऊपर. Don't worry, if you don't like the pink color, you can go with your normal nude color because you have heavy eye makeup. So you can go with the light shade of lips. And I am correcting my mistakes again with concealer. I never put on concealer near my lip area स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता होता है कि एट दी एंड वहाँ पे कंसीलर आ ही जाएगा लिपस्टिक वगैरह ठीक करते टाइम. अगर ऐसा होता है कि हल्का सा लिप का कलर इधर उधर हो गया है तो आई यूज़ फेस पाउडर उसे करेक्ट करने के लिए. पर अगर थोड़ा शेप में बिगड़ जाता है तो आई यूज़ कंसीलर एकदम अच्छे से उसे शेप देने के लिए. So I'm really into nude colors. I'm not really into pinks, and I think that it's not looking very good on me. So I'm gonna use this very nude color from Yayy Beauty on the inner side of my lips, and I'm going to tap it हल्का हल्का. उसी जगह पे रखेंगे, पूरे फेस पे नहीं, पूरे लिप्स पे नहीं करेंगे, सॉरी. और जस्ट टैप इट. थोड़ा कलर इससे लाइट हो जाएगा, थोड़ा न्यूट्रल टोन आ जाएगी इसके अंदर. एंड देन आई एम यूजिंग अ ग्लॉस. यू कैन यूज़ एनी ग्लॉस. आई एम यूजिंग पता नहीं किसका ग्लॉस, आई प्रॉब्ली लिंक इट डाउन बिलो. एंड देन दिस इज़ द ब्लश आई एम यूजिंग. इसको पता नहीं, शायद मैंने वेट ब्लश, सॉरी
वेट ब्रश मैंने इसके लिए यूज़ किया था तो वो ऊपर की लेयर थोड़ी कड़क कड़क हो गई, तो आई हल्का हल्का स्क्रैच एंड देन आई टेक आउट द पिगमेंट। इट्स रियली नाइस ब्लश। आई मीन ये पिगमेंटेड नहीं है। अगर आपको रोज़ वेयर करना है बीबी क्रीम के साथ, सीसी क्रीम के साथ, सो यू कैन डू दिस। इसको बिल्डअप कर सकते हैं हल्का हल्का, कुछ केकी नहीं लगता है और बहुत ही अच्छा सा फ्लश आता है। मैं यही वाला ब्लश यूज़ करती हूँ अगर मेरे को कहीं बाहर जाना होता है तो। एंड नो अदर ब्रश, लाइक लिटरली दिस इज़ द बेस्ट blush that you can get in this price range. I'm very much into monochromatic looks these days and क्योंकि winters वगैरह भी आ रही है तो monochromatic things look amazing. मैं nose contour भूल गई थी, so now I'm doing that with the same Savannah bronzers. And about the makeup, you can wear this makeup in any festival. अगर कोई farewell है, कहीं पार्टी में जाना है, कोई heavy makeup चाहिए थोड़ा, this is not a everyday look. स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर नहीं करके जा सकते हैं, कुछ आइडियाज़ नहीं लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटर, पूरा पैलेट है स्विस ब्यूटी का। आई एम नॉट यूजिंग वन हाईलाइटर, आई एम यूजिंग 3-4 शेड्स मिला के टू गेट दैट अच्छा वाला कलर। तो इससे ये होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कलर टच करे हैं, तो जो पहला कलर आएगा वो होगा जो लास्ट कलर मैंने ब्रश पे लिया है ऑफ कोर्स। लेकिन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश इसे बार बार अपने फेस पे लगाने से, ताकि जितने भी कलर्स थे ब्रश के अंदर वो सारे आ जाएं और उनको अच्छे से ब्लेंड करके एक अच्छी सी शाइन आ जाए। इट्स नॉट वाइट, इट्स नॉट रेड, इट्स नॉट पिंक, इट्स जस्ट अ combination of all those colors and they are not too much, क्योंकि मैंने हल्का हल्का ही डिप करा है। So you see, the more you blend, the more it will look even, smooth and nice. So this is pretty much it. I hope you guys like it. बाल तो गीले हैं, कुछ उनका कर नहीं सकते हैं. So makeup is right there. If you like it, then like the video, subscribe, maybe comment it down below if you are going to ever try this, and how do you think? How am I looking? Is it good? We'll see you in the next video. Bye.